हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू ज्ञान गंगा क्लासेस। एंड आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का रिवीजन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम आज कवर करेंगे कीवर्ड्स, समरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। हमने इस चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन भी किया है, उसकी भी हमने पूरी वीडियो डाली है इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ जा कर के ज़रूर इसे देखें। हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस, तो वो क्या होते हैं? यस, substances made up of one kind of particle, only one kind of particle is pure substance. What is the pure substance? Substance made up of only one kind of particle are pure substances. Mixture, substances that are made up of more than one kind of particles. What are mixtures? Mixtures are the substances that are made up of more than one kind of particles. Solute, the substance that dissolves into liquid state is called solute. The substance that dissolves into a liquid is called solute. Example, salt, sugar. Yes. Solvent, the liquid in which the substance is dissolved. What is the solvent? The liquid in which the substance is dissolved is called solvent. Then there is hand picking. Process of separating substances from a mixture by hand is called hand picking. हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से सॉलिड मिक्सचर्स के सेपरेशंस कितने पढ़े थे? यस, वी लर्न 4 एंड देन द सॉल्यूशंस अगेन उनको डिफरेंटली सेपरेट करने के प्रोसेस हमने 4 पढ़े थे। चलिए, नेक्स्ट इज सीविंग. व्हाट इज द सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन components of mixture of 2 or more substances with the help of sieve. What is sieving? The process of separating components of a mixture of 2 or more substances, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा substances को separate करते हैं with the help of sieve is called sieving. Yes. Now, winnowing. कुछ याद आ रहा है what we learned about winnowing? Yes, with the process of separating heavy and lightweight component of a mixture with the help of wind or blowing the air. Then threshing, the process in which grains are separated from its stalk by beating the stalk against the hard object. इसको हम पढ़े थे, they are used by farmers. Both the processes are mostly used by farmers. Sedimentation, the process of separating solid insoluble elements from a liquid by allowing it to settle down at the bottom of the container. What are the sedimentation? This is a process of separating the insoluble solid elements from the liquid by allowing it to settle down at the bottom of container. Decantation, the process of separating sediment and supernatant into a separate beakers. Filtration, the process of separating insoluble solid elements from the liquid by passing the mixture through the porous medium such as filter paper. तो कौन से? These sedimentation, decantation and filtration, all these are used to separate the insoluble solids from the liquid. Clear है? चलिए, अगला है evaporation. Process of separating soluble solid from liquid by heating up the solution.
What is it is? Yes. It is the process of separating soluble solid from the liquid by heating the solution. Condensation, process of changing the gas into a liquid state is condensation. चलिए अब हम पढ़ते हैं, हम समराइज करते हैं कि हमने लास्ट लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था. आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वी लर्नड hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration as the methods to separate substances from their mixtures. क्या इतना ही पढ़े थे या कुछ छूट रहा है? ध्यान से बताइए, कहीं कोई प्रोसेस और भी जो हमने पढ़ा हो. Yes, we also learned threshing here and here evaporation and condensation. Husk and stones could be separated from a grain by hand picking. Because of size, we can just pick them up. यही हमने पढ़ा था. The husk is separated from heavier seeds of grain by the process called winnowing. The farmers have heavier are the seeds and husk is light, and light and heavy को separate करने का process is winnowing. So this is used by farmers. Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. क्या मतलब? In both of these process, हमने पढ़ा था, in both of these process, sieving and filtration. जैसे हैंड पिकिंग में क्या कंसेप्ट है? हैंड पिकिंग का कंसेप्ट है द क्वांटिटी शुड बी लेस इन क्वांटिटी और साइज का डिफरेंस होना चाहिए, कलर का डिफरेंस होना चाहिए टू मेक श्योर कि वो हम हैंड पिक कर सकें. तो सीविंग एंड फिल्ट्रेशन में एंड विनोइंग में हैवी एंड लाइट. In a similar way, sieving and filtration में difference in size of particles is this property is used to separate them from the mixture. Okay. In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and water can be separated by decantation. Clear? If I have this mixture sand and water, तो हम कैसे? We will first do the sedimentation and then we will separate them by the process of decantation. Next, the filtration can be used to separate the components of a mixture of an insoluble solid and liquid. हमने पढ़ा था अभी कि insoluble के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. insoluble के लिए हम लोग filtration, evaporation, नहीं हम लोग evaporation में soluble, filtration, sedimentation and decantation. Clear है friends? ये दो process sedimentation, decantation and insoluble के लिए filtration we use for the filtering insoluble component from the solid. Evaporation is the process in which liquid get converted into vapor. This is used to separate the solid dissolved in liquid, that is soluble solids. Next, saturated solution. Saturated solution is the one in which no or more of that substance can be dissolved. Like
this is a container and I am having the water in it, and I poured sugar to be dissolved. So sometimes we can see that because the sugar is dissolving, it is soluble substance, still we can get that there are some sugar remaining at the bottom. Why? Because it got saturated. Why? Because it got a saturated solution. Because at this room temperature point, at this point, water can only dissolve a certain quantity. कुछ ही वो कर सकता है. A certain quantity of that element को ही वो dissolve कर सकता है at a given temperature. Clear, friends? The solubility of water is कि at a given temperature it can only dissolve a certain quantity. Once that quantity is over, then the solution becomes saturated. What is a saturated solution? Is the one in which no more of that substance, no more of solute can be dissolved at a given temperature. और हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हमको और solute उसमें dissolve करना है, then how we can do it? We can either give it a heat, like we can just heat up the mixture, and we can also add more water. The quantity increase, so solubility will also increase. Clear है friends? चलिए अब हम पढ़ते हैं, आज करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन. इसके डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं आपको कितने आते हैं. तो द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव टू डू कि पहला है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. कैसे करते हैं? क्या सेपरेशन मेथड पूछ रहा है? सेपरेशन ऑफ पैडी सीड्स फ्रॉम इट्स स्टॉक्स. ये कौन से प्रोसेस से होता है? यस, इट इज फ्रॉम थ्रेशिंग. When milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream, that is malai, is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of. यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? मिल्क है, बॉयल किया, जब वो ठंडा हो गया तो हमने इसको एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर पोर किया. सो उससे क्या हुआ? मलाई, द क्रीम इज left behind on the cloth and rest milk is then just dropped back into the container below. तो फिर इस प्रोसेस से तो हम क्या कहेंगे? कैसा प्रोसेस है? क्या ये प्रोसेस हमने अभी डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेसेस में पढ़ा था? यस, इट इज फिल्ट्रेशन. वी फिल्टर्ड द क्रीम, separated it from the liquid that is milk. Now, salt is obtained from seawater by the process of. कैसे होता है? Evaporation. Impurities settle down at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. पहले क्या हुआ? Impurities were settled down, then clear water was poured from the top. तो ये कौन सा प्रोसेस है? सेपरेशन, डिकेंटेशन. यू कैन ऑल्सो राइट, बिकॉज यहाँ दोनों बोला है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सेडिमेंटेशन, बिकॉज द प्रोसेस फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं. स्टेट इट ट्रू और फॉल्स. A mixture of milk water can be separated by filtration.
It can be? No. False, because milk and water are soluble substances. They can't be separated with the filtration. Mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. याद है winnowing कैसे होता है? Heavy and light weight. तो यहाँ पे sugar, ध्यान दें कि it is powdered salt. Powdered salt हो गया तो it became light, not crystals. तो फिर sugar and powdered salt can be separated with the winnowing? Yes, it is true. Separation of sugar from tea can be done with filtration. Can it be done? Yes, it can be done. It is true. Because tea is liquid substance, sugar is the solid one, and we can just pour it through a filter paper, तो sugar हमारी वहाँ पे rest out हो जाएगी. चलिए, grain and husk can be separated with the process of decantation. Is it true? No, it is false. चलिए, अगला क्वेश्चन है कि why do we need to separate different components of mixtures? Give 2 examples. हमने पढ़ा था, we separate different component of mixture for 3 main reasons. A, to separate and use 2 different and useful components. To remove non-useful component from the mixture. To remove impurities and harmful component from the mixture. किस लिए? Why we need to separate the component? To separate and use 2 different and useful components. हम 2 अलग अलग but useful component use करने के लिए separate करते हैं. To remove non-useful component from the mixture. ये भी होता है. और हम impurities और harmful components को भी remove करने के लिए separation करते हैं. Clear? And examples, task 2, I wrote an example for each of these. A, churning of milk to get butter, separating stone from rice, separating tea leaves from the tea. What is winnowing and where is it used? The process of separation of husk from grains, or you can say process of separation of light weight substance from the heavy weight substance with help of wind. क्या हुआ? Light weight substance from heavy weight substance with the help of wind. The process of separation is called winnowing, or you can say it can be used to separate husk from grains using wind. Where is it used? It is used to separate husk from grains mostly by the farmers. Next, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? Yes, I will separate the husk or dirt particles by hand picking the bigger stone and husk from the pulses before cooking. What is sieving? Where is it used? Process of separating solid mixture by allowing it to pass through sieve is called sieving. It is commonly used to separate barn from the floor. How will you separate sand and water from their mixture? We just learned it by the process of filtration. Sand and water can be separated as sand is an insoluble substance and can be easily filtered using filter paper. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Yes, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour. How? We can easily separate it out by the process of hand picking, as the sugar cubes are bigger in size and can be easily picked by hands.
हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर। अगर आपने ये हमारी लास्ट लेसन जिसमें हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, अगर आपने वो देखी होगी, वो पढ़ी होगी, तो आपको इसका जवाब आता होगा फ्रेंड्स। वी हैव डन एन एक्टिविटी देयर जिसमें हमने ये पूरा सैम्पल हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया था, पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी इसका क्या आंसर होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी इसका आंसर देखते हैं कि वी विल अलाउ द मडी वाटर टू सेटल डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, दैट इज़ थ्रू सेडिमेंटेशन। पहले हमने क्या किया, अलाउ द मडी वाटर टू सेटल डाउन फॉर फ्यू आवर्स through sedimentation process, then separate the settled mud from, which is also known as sediment, with the process of pouring liquid into another container through the process called decantation. Then we can also use the process of filtration to remove further impurities from the water. Clear है friends? चलिए इसी के साथ ही हम आज अपनी इस वीडियो के लास्ट पे आ गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हम और भी ऐसी ही एजुकेटिव वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और हमारे इस वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए यहाँ पे और वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।